Hi everyone. So today I'm going to discuss a very important topic which is the oral manifestation of AIDS. Okay, so I'll basically be giving you a mnemonic to learn it so that you can learn it in a very short time, okay? और ये बहुत ही interesting है. Just keep watching it and enjoy, okay? So let's start with this. See, first of all, okay, so basically we divide it into three groups, okay? So we are having group 1, group 2 and group 3, okay? So तीन ग्रुप्स में हमने इसको डिवाइड किया. नाउ आई टेल यू व्हाट इट इज़. ओके, सो सबसे पहले जो हमने ग्रुप 1 लिया है इसमें वी हैव द लीजन्स विच आर स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद HIV, ठीक है. Secondly, in group 2 we have the lesion which are less commonly associated with HIV, okay. Group 3 has the lesion which are seen in HIV, okay. So ये होता है ऊपर ऊपर से मेन थिंग, ओके. सो वील बी लुकिंग फॉर बेसिकली ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3, ठीक है. सबसे पहले हमने जब भी हमें आएगा अगर ये क्वेश्चन कि यू हैव टू राइट अबाउट द ओरल मैनिफेस्टेशन ऑफ एड्स, सो द फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू राइट दैट द ओरल अंडर दिस heading you have to write 3 groups, okay. In those group you have to mention what all diseases are there, okay. So in group 1 we basically have, let me just tell you the names then I'll tell you the mnemonic how you will learn them, okay. So सबसे पहले इसमें जो आता है ग्रुप 1 में we have candidiasis, hairy leukoplakia, Kaposi sarcoma, non-Hodgkin's lymphoma and periodontal diseases. And in periodontal diseases also there are two main disease which is necrotizing ulcerative gingivitis and necrotizing ulcerative periodontitis, okay. Okay, so now I'll tell you how you will remember them. See, सबसे पहले just for the sake of learning them I've made a very simple mnemonic. See, सबसे पहले क्या है हमारे पास कैंडिडियासिस, ओके. तो कैंडिडियासिस उसको याद करने के लिए सबसे पहले व्हाट यू विल डू, जस्ट ड्रॉ सी, ओके. देन वी हैव हेयरी लुकोप्लेकिया, यू विल ड्रॉ हेयर्स. ऐसे हमने इसके बाल बनाए. वी आर बेसिकली मेकिंग वन कार्टून, ओके. सो सबसे पहले हमने सी लिखा फॉर कैंडिडियासिस, देन हेयर बना दिया उसके, दैट इज़ फॉर हेयरी लुकोप्लेकिया. Now we have Kaposi sarcoma, so K, write K under his mouth and just draw it like this. So this is kind of you have drawn the face, okay. तो ये बन गया, okay. Now you have to do, अब इसके हाथ पैर भी बना दे, right. We have to draw the legs, then the hands, okay. And now what you have to do is just provide him 2 plates. इसके पास 2 plates हैं, ठीक है. In which he will write, he will mention basically he is suffering from these diseases, okay. तो यहाँ पे ये मेंशन करेगा. तो यहाँ पे क्या मेंशन करेगा, एक प्लेट में he has written that he is having non-Hodgkin's lymphoma, okay. Yes, he is having non-Hodgkin's lymphoma. In the second plate he will write that he is having periodontal diseases, PD. Now in periodontal diseases also we have 2 main diseases which is necrotizing ulcerative gingivitis and necrotizing ulcerative periodontitis, okay. So basically 2 diseases are there which, so this is all about the group 1 lesions. I hope this is very easy and you are able to correlate with this diagram. You don't have to draw this diagram in your examination, this is just for the sake of learning. So I hope it is clear to you. Just try to correlate it with what I have mentioned over here and you will be able to learn it. तो एकदम से जब भी whenever it come in your exam you should this should strike in your mind that what you draw, so that you can write it quickly, okay. Now group 2 lesions. Now moving on to the group 2 lesions. See, group 2 basically has a lesion which are less commonly associated with HIV, okay. So in this also we'll be talking about the 3 main lesions. So the first is bacterial infection, second is melanotic hyperpigmentation, then third is necrotizing ulcerative stomatitis, okay. For this also I'll tell you a mnemonic. See, in this what you will do, you will draw one person like this. He's having his legs, his hands, and now he is also holding 2 plates. In these plates this man is actually mentioning about the disease he is suffering from. Just learn it this way. तो इसने 2 प्लेट्स ली हुई हैं, इसमें ये हमें बताएगा कि इसको ये वाली डिजीज़ हैं. तो सबसे पहले ये बोलेगा कि इसको है सबसे पहले हम ये याद रखते हैं कि ना ये पर्सन काला है, तो बेसिकली जस्ट थिंक कि ये काला है, तो इसको बहुत ज़्यादा मेलानिन पिगमेंटेशन है. तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको है मेलानोटिक हाइपर पिगमेंटेशन,
ओके तो इसको क्या है, मेलानोटिक हाइपरपिगमेंटेशन। ऐसे ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर लर्निंग मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, अदरवाइज ही इज़ नॉट हैविंग सच काइंड ऑफ थिंग, इट इज़ जस्ट ताकि आपको याद हो जाए। तो इसको सबसे पहले क्या है, मेलानोटिक हाइपरपिगमेंटेशन। दूसरा, अब इस इन दो प्लेट्स में ये क्या क्या डिजीज़ मेंशन करेगा, इसमें इसने लिखा है सबसे पहले कि आई एम हैविंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब हम पूछेंगे यस यू आर हैविंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट यू हैव मेंशन, बट ये भी तो बताओ कौन सा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो उसने बोला आई एम हैविंग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। व्हाट इज सफरिंग फ्रॉम, ही इज सफरिंग फ्रॉम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है। दूसरी प्लेट में ही हैज़ मेंशन कि मुझे है नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव स्टोमेटाइटिस NUS। ओके तो उसने क्या लिखा है कि दूसरी प्लेट में कि आई एम हैविंग नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव स्टोमेटाइटिस। आई होप आपको ये समझ आ रहा है। दिस इज़ वेरी सिंपल। ओके उसके बाद मूविंग ऑन टू द थर्ड लीजन। थर्ड ग्रुप में कौन से पेशेंट्स आते हैं, थर्ड ग्रुप में वो इसमें वो लीजन्स होते हैं विच आर सीन इन HIV। ओके दे आर सीन इन HIV ओनली। ओके अब इसमें हमें कैसे याद रखना है, सी जस्ट go this way। अगर आप systematically you will go in this way so you will be able to learn it। okay see सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है कि let's do it this way। जैसे कोई भी पेशेंट है उसको कोई भी इन्फेक्शन है राइट, तो सबसे पहले किसी पेशेंट को हुआ इन्फेक्शन राइट, लेट मी राइट इट ओवर हियर। सबसे पहले पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ। अब व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन में यू विल हैव टू टेल ना कौन कौन से इन्फेक्शन होते हैं। तो बेसिकली हमें कौन से इन्फेक्शन पता है, वी नो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल हो सकता है और फंगल हो सकता है। ठीक है, ये इन्फेक्शंस होते हैं पेशेंट को। अब इन्फेक्शन में यू हैव टू रिमेंबर बैक्टीरिया में कौन कौन से इन्फेक्शन होते हैं, ये इसका एक निमोनिक है याद करने के लिए। यू कैन राइट एक AC। जैसे ही किसी पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, ही सेज कि आई नीड एक AC, मुझे एक AC चाहिए। ठीक है, तो ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर लर्निंग आई हैव मेड दिस निमोनिक। E से इट इज़ फॉर E. coli। ठीक है, K से इट इज़ क्लेप्सियला निमोनिया, A से एक्टिनोमाइसिस इसराइल, and C stands for cat's catch disease। okay I hope it is clear to you, it is very simple। okay so now I'll talk about the viral disease। so in virus disease, wait, okay in viral disease basically you just have to remember the name of one disease which is recurrent aphthous stomatitis। okay so virus has recurrent aphthous stomatitis। okay clear to you, very simple and very basic। after this you have fungal disease। for fungal I have made a mnemonic which is his as cry। I know it might sound funny to you but it's okay, this is just we have to write in the exam, so that's why I made this mnemonic। okay ताकि ये अच्छे से हमें याद रहे and we can write it। so his means histoplasma capsulatum। okay histoplasma capsulatum। as means aspergillus flavus, and cry means cryptococcus neoformine। okay I hope it is clear to you now, so you can write this। yes, now what happens when the patient is having any this kind of infection, so he will basically be taking some kind of drug to treat them। so just for the sake of remembering I have written drug। okay तो सबसे पहले पेशेंट को क्या हुआ, इन्फेक्शन हुआ, नाउ ही इज़ टेकिंग सम ड्रग। तो यहाँ पे दूसरा कॉज क्या होता है, दूसरे लीजन्स में क्या आएगा, ड्रग रिएक्शन। तो ड्रग कैसे रिएक्शंस हो सकते हैं, अल्सरेशंस हो सकते हैं। तो ड्रग रिएक्शंस क्या कौन कौन से होंगे, अल्सरेशन, ये बस ऐसे ही याद करने के लिए। ओके तो क्या होंगे, अल्सरेशंस। ठीक है, अब क्योंकि पेशेंट ने ड्रग्स लिए तो उसकी वजह से अब व्हाट विल हैपन, देयर विल बी सम न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस। ओके ऐसे आई एम जस्ट को रिलेटिंग इट ओवर हियर। ओके तो ऐसा कुछ इट्स नॉट देयर कि इन्फेक्शन हुआ देन यू हैड ड्रग, इट्स नॉट लाइक दैट, बट जस्ट दीज आर सेपरेट थिंग्स, बट आई एम जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग आई एम जस्ट को रिलेटिंग दैम over here। okay so neurologic disturbance, basically we know two neurologic disturbances which we read in general medicine। these are Bell's palsy and trigeminal neuralgia। okay just remember these two neurologic disturbances, you just have to remember these two in case of your oral manifestation of AIDS। okay next, now you have talked about the infection, you have talked about the drugs, and you talked about the neurologic disturbance। after this just two more names which you can remember like this only। so this is leukonoid reaction and epithelioid angiomatosis।
These are just the names which you have to remember, and I can't help it for this. Okay, so let me tell you once again. So basically when you talk about group 3, so these are basically the lesions which are seen in HIV infection. So in infection, basically we have bacterial infection, we have viral infection, we have fungal infection. Okay, but in case of bacterial infection also, I told you what mnemonic, that is AC. So AC. Okay, so in this, E stand for E. coli. Yes, E stand for E. coli, K for Klebsiella pneumoniae, A for actinomyces rel, then C for cat scratch disease. In viral, I told you only one you have to remember, which is recurrent aphthous stomatitis. Yes, so it is recurrent aphthous stomatitis. Yes. In fungal, I told you a mnemonic, which is this. Here I cry. In this, HIS stand for histoplasma capsulatum. S stand for Aspergillus flavus. C stand for Cryptococcus neoformans. Okay. Then this is fungus. Then the patient has to take some kind of drug. So you'll write some what? You'll write the ulceration. So there will be drug reactions. For that you have ulcerations. Okay. After the drugs, the patient will have some kind of neurologic disturbances. Yes. So in the neurologic disturbance, you will write Bell's palsy. You will write trigeminal neuralgia. Okay, and two more names which you have to remember is like epithelioid angiomatosum and lichenoid reaction. Okay, so this was all about the oral manifestation of AIDS. I hope it is clear to you. If it is not, then please replay the video and watch it again, and just try to draw these diagrams which I have made simple to remember, and I'm very much sure you will be able to recall them whenever it is asked, whenever a question is asked in your theory as well as in your viva. Thank you so much for watching.